Tell us the difference between electronics and electrical engineering. What is the difference between growth and development? फोर्सेज में आपके डिग्री के क्या यूजेस हो सकते हैं? How the policing in armed forces deal with law and order? अच्छा बताइए कि why the Article 32 is called soul of the Constitution? एक पुलिस स्टेट का मतलब क्या होता है? You are simply guessing the things, Sudha, I think. Yes, sir. May I come in, sir? Please. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Kindly come in. Please be seated. Thank you, sir. पूछिए. लखन अंसारी. Yes, sir. लखन, आप जो आपका गेटअप है और जो फोटो आपने लगाई है उसमें क्या क्या फ़र्क है? So in my photograph, I am wearing another formal shirt which is blue in color, but the picture is black and white here. And currently I'm wearing a white formal shirt. Apart from that, in my photograph, my hair are a bit lengthier, but right now I have trimmed my hair. Also, I have reduced some amount of fat as compared to the photograph that I have clicked. It was about 8 months back photograph. There is one more feature which you have not mentioned, which is a significant feature. I am not wearing specs. Specs you're not wearing. Yeah, in the picture I'm not wearing specs, but I'm wearing specs here. Lakhan, tell us, since you've done electronics from BITS planning. Yes, sir. Tell us the difference between electronics and electrical engineering. So electronics engineering primarily deals with semiconductors and their research and their applications. It deals with subjects like VLSI design, power electronics, while electrical engineering deals with electricity generation, transmission, distribution, and its application in industries, households, and agricultural inputs and outputs. तो जो हमारे घर में जो अप्लाइंसेस होते हैं ना, आप क्या बताएंगे कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आते हैं, कौन से इलेक्ट्रिकल की कैटेगरी में आते हैं? Can you tell us? So the appliances that in our households we see, they function on alternating current electricity. The electricity that is supplied to those appliances through power line and substation, that is part of electrical engineering that we study, while the actual components of the appliances like smart chips, integrated circuits, those are part of electronics. So you have mentioned that you have worked in Bengaluru. Yes, as a product growth manager. Yes, sir. There is also a term product development, some people say. Yes, sir. But you have mentioned product growth manager. Yes, sir. So is there any difference between product growth manager and a product development manager? So there is a very fine line difference between these two terms. However, it depends on the organization that you're working in, what title they give you. The organization that I worked in, my title was product growth manager. So what is the difference between growth and development? So in product sense, in terms of corporate product. In general, in economics, we hear a lot about growth, and we Yes, also sir. hear a lot about development. So growth primarily deals with quantitative development. For example, we say GDP growth rate, or we say cumulative annual growth rate. So it is a quantitative term which actually deals with how much a quantity or how much a metric has increased, while development is a holistic term. It actually, in economic terms, it actually deals with the overall improvement in lifestyle, quality of life. What is sustainable development then different from development? So sustainable development, I would like to quote Brundtland report here from 1987, wherein they said that the world that we live in today is not a debt, is not a inheritance from our ancestors, but a debt from our future generation. So inspiring from this quote, sustainable development means to utilize the resources of today without compromising the future needs of tomorrow. So, have you heard about intergenerational equity? I'm sorry, sir, I'm not aware about that. What is the difference between equity and equality? In our constitution, we talk a lot about equality. Then there is something called equity also. So can you give us one example that this is the example of equality in our constitution, and this is the example of equity? Or what is the difference? You can tell us. Sir, I'm not sure about the intricacies, but I can take a intelligent guess here. Our constitution says that
we have to, the preamble of the Constitution says that we will promote equality of status and opportunity. Here, equality means. And then what is equity? Yes, I'm coming to that. Equality here means equality of individuals in the eyes of law, whereas I think equity means actual realization of the equality in terms of status and opportunity. For example, in our society, women are oppressed, but if we keep them in a race towards achieving something at equal footing with men, we can say that they are equal, but equity will ensure that we provide them the opportunity and platform to be at equal footing with men, as far as I can tell, sir. आप करें. लाखन बंसाली, Yes, sir. फोर्सेज में आपकी डिग्री के क्या यूजेस हो सकते हैं? Sir, the forces of today are modernizing, and the government plans to integrate various modern warfare equipments and tools and technologies, AI, IoT, digital softwares. In CAPF, whose mandate is to protect our primary mandate is one of the primary mandate is to protect our borders. We are integrating comprehensive integrated border management systems. These all functions on these. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मत बताओ, ये बताओ काम हो क्या रहा है? Sir, I'm not sure I understand the question. मैं ये कह रहा हूँ कि कोई आपका कोई सजेशन दे सकते हो, कोई एग्जांपल दे सकते हो कि ये आपकी डिग्री के जो यूजेस है चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, इन चीज़ों के डिफेंस में कहाँ यूज़ हो रही है, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी? Yes, sir. I can talk about drone technology. So, in current today only I read the news that there was a racket of smugglers that were caught at the Pakistani border, Indo-Pakistani border in Rajasthan, and those were smugglers who were using drone technology to smuggle gold and cocaine and other drugs. So, ड्रोन के अलावा so drone के अलावा we can use IoT sensors, thermal sensors at border areas to guard our borders and detect any unidentified movement. Apart from that, we can use infrared. पुलिसिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है? What is policing? Sir, as far as I can tell, policing means to maintain law and order and to curb unnecessary activities which harm the harmony of the society. एक पुलिस स्टेट का मतलब क्या होता है? So a police state is it is synonymous to a dictatorial regime wherein the government has absolute control of the police and वापस से कंपेयर करो दोनों आंसर्स को, पहले वाले को अभी वाले को, कि पुलिसिंग क्या होती है, पुलिस स्टेट क्या होता है? I'm sorry, sir. I think I made a mistake there. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, क्या फ़र्क होता है दोनों में? Sir, it is used so these are two kinds of modulation which are used to send signals at huge distances. कौन से वीडियोस में, कौन से ऑडियोज में इस्तेमाल किए जाते हैं? Sir, I'm not sure, but in videos we use amplitude modulation and in audios we use frequency modulation. एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR. Yes, sir. इसको अपन ये कह सकते हैं ना कि V प्रोपोर्शनल I के और V प्रोपोर्शनल R के, In terms of mathematical terms, we can say that. कह सकते हैं. यानी कि जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. Not necessarily, sir. The current can also be higher. फॉर्मूले में तो यही होता है. So, if we look at just from the mathematical perspective, we can say that. However, in real circuits, the voltage doesn't determine resistance. It is the resistance which determines the current, and voltage is an externally applied quantity to push electrons. What to is make current actually? So, current is basically flow of charge. Flow of Charge. or flow of electrons? The electron is charge, but when we come to semiconductors, we often regard flow of holes, which are positive charge particles, which are considered positive charge particles. Hence, overall definition can be said that current is the flow of charge. Okay. Mr. Lakhan, ये बात बताइए, you just tell कि how the policing in armed forces deal with law and order. I think this is not in their scope of job. So, deal with Law and order. You have said you have applied for armed police forces. Sir. Yes, sir. Do armed police forces deal with law and order? It is a job of civil police.
Yes, sir. It's not the primary mandate of armed forces, central armed police forces, to deal with law and order, but in certain situations they assist state police. For example, in the Naxal hit areas of Chhattisgarh, Jharkhand. Only they help when they are called for it. Yes, sir. So in your answer, you say that it is their primary job. I think it's not at all their primary job. And even if they are called to assist the civil police or the civil administration, then only in the remotest possibility they are used. Why are they used in remotest possibility? And in the rarest of the rare cases, even if they had been called to assist. Sir, in rarest of the rare case, when the state police is incapable of curbing any... You are using a wrong word. Incapable नहीं होती, ऐसा नहीं होता. मतलब जब law and order violent हो जाता है ना, and it is difficult to control with ordinary methods, then they are called upon. ठीक है. और उस केस में भी उनको मतलब जो है शूट एंड साइट, क्योंकि उनके अधिकतर क्या होता है वो शूट एंड साइट की थ्योरी से बिलीव करते हैं, तो उनको ये डायरेक्शन होता है कि आपको जब डायरेक्ट किया जाएगा तभी आप यूज करेंगे. ठीक है. तो आप यदि ये बन रहे हैं तो इसमें बेसिक जॉब क्या होगा आपका? भाई आपका जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का जो एक्सपीरियंस है, दिस इज द आई थिंक नॉट प्राइमरी. यू आर नॉट गोइंग टू बी इन ए लैब और there you have to face the dushman. Yes, sir. So what will be your job as an assistant commandant? Because it is your supervisory job. It's not your job of a sapper. Okay, sir. तो क्या है आपका जॉब? इसमें नेचर ऑफ जॉब क्या होगा इस फोर्स में आपका? Sir, it will depend on which CAPF I will be part of. Different CAPF. Suppose you are deployed at Jaisalmer border area. What will be your job? So, as part of assistant commandant in BSF in Jaisalmer border, my day-to-day job would look about guarding, managing the other personnel who are guarding the border. It can also include administration of the daily tasks of BSF, even operations such as search and search for any unidentified or illegal activity. How will you do all this? You alone will do? No, not me alone, sir. I will, since this is assistant commandant, will be an officer post. So, as far as I can tell, it will include primarily managing and administering and leading the platoon or other personnel of BSF while managing all of the tasks such as guarding the border, monitoring the situation. If they have entered, they have crossed our border, what will you do? If the enemy has entered, Yeah. sir, I will follow. You will guide from a distance, or you will be leading it? So I will be leading it because it will be. How will you lead? So what equipment you will carry? So whatever equipments or whatever protocols I would be told to do in my training, I would do that. Like for example, informing the command headquarters or informing the army as well as other stakeholders such as. If you don't have so much of time, they have penetrated in such odd hours that communication system has been failed. Then what will you do? Sir, I think the You just tell me any example which you have read, जिसको आप अपना हीरो मानते हो आर्म फोर्सेस के अंदर, जिसने कुछ ऐसा किया हो, मतलब जिसके जलवे से आप पर प्रभावित हैं, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट फ्रॉम हिम. तो ऐसा कौन आदमी है जिसको आप अपना रोल मॉडल मानते हो? Sir, Anyone? Sir, there are many. I don't restrict my role models to one. But you just quote one or two. Captain Vikram Batra, Captain Sandeep. What did he do? So he participated in the Kargil war. He led his platoon to capture Tiger Hill. Then he just bothered communicating to seniors, or he just initiated himself? So before starting the operation, he was. Sir, I saw the movie about his role in the war.
before starting the war, he did communicate his commanding officers that what is his plan, and then he led his team, he led his platoon towards accomplishing the mission. Even in case of Captain Sandeep, Major Sandeep Unnikrishnan, I'm sorry, I refer to him as Captain. Even Major Sandeep Unnikrishnan, before he attained martyrdom, he communicated to his commanding officer that don't come up, I'll आपने handle them. सर को बताया था इक्वलिटी के बारे में. इक्वलिटी के प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में है? Sir, Article 14. ओनली आर्टिकल 14. So Article 14 to Article 18 have the provisions of equality. What is the Article 14 says? So Article 14 states that the state shall not each and every citizen has right to equality before law. ऐसे मर्जी है जो मच्छी को यार, तुमने पढ़ा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन तो वैसे बोलो. I'm sorry, sir, I cannot recall the exact. आर्टिकल 15. So Article 15 says the state shall not discriminate amongst its citizens. So it is related to not discrimination among citizens. Which rights are not available? Which rights are available to non-citizens under Constitution of India? So all rights are available to non-citizens except Article 15, 16, 19, 29 and 30. All fundamental rights are available to non-citizens of India except rights mentioned in Article 15, 16, 19, 29 and 30. Okay. अच्छा बताइए कि why the Article 32 is called soul of the Constitution? So because that article provides for constitutional remedies, fundamental rights will have no meaning if there is no procedure or there is no a way to enforce them. With Article 32, the Supreme Court of India can enforce the fundamental rights if there is any violation. The citizens can approach Supreme Court. So, on the violation of the fundamental rights, a citizen can also move to High Court as well? Yes, sir. But the Supreme Court has laid guidelines in how to effectively enforce Article 32. There is a procedure established. The Supreme Court has laid down, or already in the Constitution it is laid down? Sir, as far as I can recall, Supreme Court laid down the guidelines. You are simply guessing the things, Mudha, I think. Yes, sir. Here I'm not able. What are the latest amendments made in Representation of People's Act? Sir, I'm not sure, sir. What are you sure about Representation of People Act? Sir, Representation of People Act 1951. How many amendments have been done right from 51 up till now? In the Constitution, sir. In the Representation of People's Act? I cannot recall, sir. Okay. You have done your graduation from very esteemed institute in electronics and electricals. Yes, sir. What is its use in Metro Rail Corporation? Metros. Sir, in metros. Metro rails, I mean to say. मेट्रो तो फिर बड़ी चीज होगी, सिटी में भी मेट्रो आ गया, मतलब मेट्रो रेल्स में क्या इसका यूज है? Sir, in metro rails we have RFID. We have, so if we talk about metro rails, I'll mention about the overall design and equipment that is used in design. None of the business of electronics and signaling, designing में फिर मैकेनिकल वाले क्या करेंगे? Sir, designing a metro rail will require close collaboration between different. आपका क्या रोल रहेगा? Sir, my role will be to, as an electronics engineer, my role will be to designing the communication systems, the smart braking systems. क्या कहते हैं उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम को मेट्रोज में या रेल में क्या है, मतलब सिग्नलिंग है भाई मेन रोल तो? यस सर, सिग्नलिंग इन सिस्टम्स. यार आप इलेक्ट्रॉनिक से आप जो है डाइवर्ट हो रहे हो, आप जिस फील्ड से आए उसमें नहीं गए आप, ठीक है, फिर आप आर्म फोर्स, मतलब यू कैन गो, इट मे बी योर ड्रीम, पर कम से कम जिस चीज़ को कर रहे हो उसको तो समझो. चलो एनीवे, एक दो क्वेश्चंस और है. जी सर. एक तो आप एक्टिंग करते हैं? सर, आई डिड टेक पार्ट इन स्टेज प्ले. साइंस फिक्शन बता सकते हो इंडियन सिनेमा में? सर, द मूवी ऑफ रजनीकांत मूवी रोबोट एंड रोबोट 2.0, even Shah Rukh Khan's movie Ravan, that can be considered science fiction. अभी आपने बताया कि आपने एक मूवी देखी है
जो कैप्टन विक्रम बत्रा पे थी, Sorry, sir. कैप्टन विक्रम बत्रा पे थी, Yes, sir. है ना? Yes, sir. अभी एक बड़ा डिबेट का टॉपिक चल रहा है कि जो इंडियन सिनेमा है वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है या कोई पर्टिकुलर नैरेटिव को लोगों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। टीवी डिबेट में चल रहा है ना ये। जैसे अभी एक मूवी आई थी छावा जी सर। रिसेंटली, यस सर। उसको लेके काफ़ी डिबेट हुई, औरंगजेब को लेके काफ़ी डिबेट हुई। यस सर। बोल करके कुछ स्टेटमेंट आए। आप क्या समझते हैं इसमें कि मूवीज़ का जो अल्टीमेट जो एम होता है वो क्या प्रॉफिट होता है या फिर कोई और हिडन उनके एजेंडाज भी हैं? So movies, they carry both their aims. They carry aim for profit maximizing as Prime Minister Modi mentioned. Movies also carry a way to enhance soft power of our country in diplomatic relations. So I feel these debates that which happen on TV, they are primarily motivated to capture TRPs, but it is a responsibility of both the producers, actors, as well as the consumers of entertainment to be vigilant of what they are seeing and how they perceive it. Also, the government can, for example, the government can intervene. इसके लिए सेंसर बोर्ड है? Yes, sir, Central Board of Film Certification. आपको क्या लगता है, ठीक काम कर रहे हैं? So I think they are working within सेंसर बोर्ड एक किसिंग सीन है उसको काट देता है। Yes, और sir. एक बहुत वायलेंट सीन है जिसमें ब्रूटली मर्डर किया जाता है, उसको बड़े शान से दिखाया जाता है। क्या ज़्यादा खतरनाक है? So I think censor boards keeps in mind the current social perceptions that we have. For example, PDAs, which we call public display of affection, which includes kissing and hugging, are not considered are considered obscene in Indian society. What about murder? A brutal murder? Sir, even in some movies, the brutal murder, they are censored to a lot of extent. If the censor board feels they show human brutality or human violation, but in general, murders and bloodshed, they are not considered a very obscene kind of scene in most of the societies in the world, because we as humans have evolved from such आपकी kind राय of. है या आपने कहीं पढ़ा है इसको, किसी को कोट कर रहे हो आप? So this is an article which I read in Times of India. I'm not sure about the author of that article, but they made different points from different perspective of how these movies should be made. It was a debate that came after this movie Animal, which was released. अरे भाई, उसकी थीम यदि डिमांड कर रही है कि मर्डर होना चाहिए तो मर्डर होगा। भाई आपका पिक्चर क्या दिखाता है? यहाँ भी लोग मर्डर करते हैं, तो वो तो इफ जैसे अभी आपको कोई अननेसेसरली प्रोवोक कर देगा, ठीक है, और आप असिस्टेंट कमांडेंट हो, तो आप यदि मर्डर करोगे, चाहे एनिमी का करो चाहे सिविलियन का करो, मान लो जो कोई सिविलियन है वो ड्रग कार्टेल को चला रहा है और आपने उसका मर्डर कर दिया, तो वो कैसे अनवारंटेड है? वो थीम ऑफ दी स्टोरी, मतलब उस समय का जो सिचुएशन है दैट इज डिमांडिंग, ठीक है। तो उसका वो आपका बैकग्राउंड देखोगे आप कि भाई किस बैकग्राउंड में, किस पर्सपेक्टिव में ये ऑफेंस कमिट किया गया, वो ऑफेंस है या नहीं है, फिर वो एक अलग बात है। तो इसलिए ये क्या एवरीथिंग, अब भाई ये जो सर पूछना चाह रहे हैं, दोनों चीज में अंतर है। वल्गैरिटी एक अलग चीज है, ठीक है, और मतलब किसी भी थीम में मतलब मर्डर होना वो बिल्कुल अलग चीज है। उसका पर्सपेक्टिव क्या है वो देखा जाए। Yes, sir. भाई आपको आर्म फोर्सेस के रूप में यहाँ बुलाएंगे और आपको कहा जाएगा फायर कर दो, और फायर करने में सिविलियन भी मर सकते हैं, पर अब उसमें पर्सपेक्टिव देखा जाएगा कि दे हैड बिकम सो वायलेंट दैट देयर वाज नो वे आउट एक्सेप्ट कंट्रोलिंग देम बाय फायर। Yes, sir. So these are the. भाई होता क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को जब हम हैंडल करते हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बॉर्डर पे हो चाहे कहीं पे हो, सबसे पहले होता है नेगोशिएशन, समझाइश करते हो आप, ठीक है। समझाइश वैसे नहीं करते हो तो फिर आप भाई लाठी चार्ज कर सकते हो, टीयर गैसिंग कर सकते हो, वो नहीं होगा तो अपन हवाई फायर करते हैं, हवाई फायर नहीं हुआ तो अपन फायर करते हैं। ऐसी इंडिविजुअल सिचुएशन है कि मैं आम मान लो कोई आपकी वाइफ को मार के लूट के जाना हो और आपके पास में पिस्टल है, चाहे वो पिस्टल लाइसेंस्ड है या अनलाइसेंस्ड, वो तो एक अलग चीज होगी, ठीक है। तो उस सिचुएशन में यदि ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको गोली चलाने के अलावा ऑप्शन मतलब ऑप्शन नहीं है और आप प्राइवेट डिफेंस में ही कर रहे हो, तो दैट मर्डर इज आई डोंट थिंक इट इज बर्दर, मतलब आपको इस सिचुएशन के हिसाब से है ना। ऐसे ही किस सीन है तो हर किस सीन थोड़ी ऑप्शन है, मतलब ठीक है भाई मूवी का मतलब ही यही है, अदरवाइज तो लोग पिक्चर देखने क्यों जाएंगे? स्टोरी लाइन डिमांड। तो अब वो उसका ये है कि एक्सट्रीम सोसाइटी डर नोट करोगे, मतलब कोई भी चीज की एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir.
दिस इज व्हाट आई फील. बाकी हो सकता है So these are the arguments which are given by the directors of those movies as well. यार अपना दिमाग इस्तेमाल करो. Yes, sir. डायरेक्टर ने तो कह दिया होगा. Yes, sir. Yeah, असिस्टेंट I also agree with that, sir. थोड़ी है कि कोई पहले वाले मेजर साहब या कैप कर्नल साहब क्या कर गए थे, आपको सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना है. No, sir. ठीक है ना? Yeah, I also agree with that. वो आपकी बिल्डिंग ऑफ योर मतलब इंटेलेक्चुअलिज्म, आपके माइंड को डेवलप करने में हेल्पफुल हो सकता है, बट अल्टीमेटली तो आपका खुद का जज्बा और दिमागी आपको काम करेगा जिस फोर्स में आप जा रहे हो. मतलब Yes, sir. I forgot to mention these reasons, but I also feel the same. जावेद अख्तर का भी एक स्टेटमेंट है कि फिल्में समाज से और समाज फिल्मों से सीखता है. जावेद अख्तर का स्टेटमेंट सर. फिल्में समाज से सीखती है और समाज फिल्मों से सीखती है. Yes, sir. यूज दैट. इसमें चूँकि आप बिट्स पिलाने से हैं तो कोई बात ही नहीं है ना सिलेक्शन नहीं होने का. लेकिन 2-3 चीज़ें सभी ने बताई आपको. एक तो आप ना गेस वर्क बहुत ज़्यादा करते हो. जी सर. और गेस वर्क नहीं करना चाहिए जो अपने को नहीं मालूम है. वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक आध बार अपने को बोलना चाहिए सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर. इस तरह की चीज़ें हैं. तो जब आप गेस वर्क करते हो तो देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स. गेस वर्क होता है परमिशन के बाद. ओके सर. ठीक है, ये हैं. बाकी जब पैनलिस्ट कोई भी बोल रहा हो तो आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए ना. आपको लगा नहीं कि आपने इंटरप्ट किया, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि सर भी बोल रहे हो साथ में आप भी बोल रहे हो. ओके सर. हाँ? यस सर. तो आई जब कोई रिमेंबर बोले दैट. तो आप सुनो उसको. ये कई बार खुद कैंडिडेट को पता नहीं होता क्योंकि वो थोड़ा प्रेशर में भी होता है. हाँ? इधर जो बैठे उनमें और उधर बैठे उनमें फ़र्क है. तो ये प्रैक्टिस से हो जाएगी ये चीज़. दूसरी चीज़ जैसा सर ने बता दिया है, गैस नहीं करना. आता है तो ठीक है, नहीं आता तो सॉरी, गलत जवाब नहीं देना है. और दूसरा जो चीज़ें होती हैं ना उनका आप जो ऑब्जर्वेशन करते हो उसको प्रॉपर वर्ड्स में यूटिलाइज करो. यहाँ पे आपके वर्ड्स साथ नहीं देते जो आप कहना चाह रहे हो उसके लिए. ओके सर. है ना. थोड़ा सा शब्दों का सही इस्तेमाल. जी सर. बाकी ठीक है, आपका वैसे वगैरह सब बढ़िया है. स्कूलिंग बहुत अच्छी है आपकी. जी सर. सब मैं ये देख ऐसा है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कहूँगा कि आप जिस सर्विस में जा रहे हो उस सर्विस का एम क्लियर हो और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जो क्लियरिटी होती है. जी सर. ठीक है, मतलब मैं आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन कि आप जिस जगह जा रहे हो उसके बारे में आप एम क्लियर रखो. और हर चीज़ में यदि आप सॉरी करोगे तो फिर आपको आता है. आपने बहुत सी एजुकेशन ली है, नो डाउट. स्कूलिंग में आपने टॉप किया है, आपने बहुत सारे मेडल किए हैं, आपका खुद का यू आर फेचिंग ए गुड सैलरी, योर पेरेंट्स आर फेचिंग गुड सैलरी. पर वो सब चीज़ें सेकेंडरी हैं. आज तो आपके सामने अर्जुन की तरह, चिड़िया की तरह से जैसे आँख है ना वो है. तो उस गोल को आप थोड़ा सा शार्पन करिए. दिस इज माई ओपिनियन. ओके सर. ओके, थैंक यू. Thank you, sir. Sir, yes, sir. I have one question. Sir, when you asked about forces, I thought you were asking about. So I got confused between whether you were asking about the armed forces or central armed. I am asking about armed forces. मैंने armed forces सर बहुत नौकरी की है. ठीक है, मैंने बहुत गोली चलाई armed forces के साथ, law and order में. Okay, sir. है ना. तो sir, I just tell you when I did it. I was जसलार जहाजपुर. तो पूरे इंडिया में यदि कहीं कर्फ्यू लगता था तो जहाजपुर में लगता था. ठीक है, वहाँ हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी बहुत है तो वहाँ अलग तरह का इशू था. तो हमारे यहाँ आर्म फोर्सेज रहती थी तो कमांडर साहब साथ रहते थे, पर वरना उनको कहता था आप है ना मेरे बिना एक शब्द नहीं बोलोगे. ठीक है, इसके बाद में फिर जब गुजर जो नेक्स्ट कैंडिडेट आ रहा है वो कोटपुतली से आ रहा है. गुजर आंदोलन को उस समय हमने आर्म फोर्सेज को लिया क्योंकि यहाँ पे 65 लोग मर गए थे 2007 में. है ना. ऐसे बहुत मतलब बहुत जैसे बोरवेल में मैंने आर्म फोर्सेस के साथ भी आई हैड बीन एसडीएम, आई हैड बीन एडिशनल कलेक्टर, मैंने बहुत नौकरी की हुई है. इसलिए दोनों के रोल में अंतर है. तो आप उसके रोल को समझिए. सिर्फ पिक्चर देखने से है ना रोल क्लियर नहीं होता. और यदि पिक्चर देख के कर रहे हो तो उस पिक्चर को फिर 10 बार देखो. जी सर. है ना. जैसे आपने चाणक्य ने चंद्रगुप्त कैसे बनाया, है ना. ही वाज ए दास. ठीक है, वो किसी बैकग्राउंड से था, राजकुमार था, बॉर्न पीपली वन का, परंतु वो दास था, स्लेव था. उसको स्लेव से उसने राजा बना दिया. तो डिटर्मिनेशन रखो चाणक्य जैसा यदि टारगेट अचीव करना है तो. आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू एट ऑल. यू आर ए वेरी ब्रिलियंट चैप, यू विल गेट थ्रू अनडाउटेडली. पर पास भी हो जाओगे ना तो भी आगे तो जज्बा बनाए रखना पड़ेगा, तभी आप आर्म फोर्सेज में आपका नाम कमा पाओगे और आपको मतलब सेटिस्फेक्शन आएगा. देखो हर चीज़ की एक स्टेज है. आपने बहुत सी एजुकेशन ली, बहुत से परिवार से हो, इसका मतलब आप में ड्राइविंग फोर्स है. तो उस ड्राइविंग फोर्स को आपको सतत बनाए रखना पड़ेगा. Yes, sir. Anyway, best of luck. Thank you, sir. Thank you.
All the best. Thank you, sir.